Hello everyone. Today we are going to talk about GERD or gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease is a digestive disorder जिसके अंदर की the esophagus, which is the food pipe that carries the food from your mouth to the stomach, gets affected and it results in this problem. बेसिकली ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो आपके खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है। पर जब इस ट्यूब में किसी कारण से प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली लोअर एंड ऑफ द स्टमक फूड पाइप में, अगर उसकी प्रॉपर क्लोजर नहीं हो रहा है ड्यू टू अ वीक स्फिंक्टर और देयर इज़ प्रॉब्लम इन द मस्कुलर ट्यूब इटसेल्फ, उन दोज केसेस दिस प्रॉब्लम गेट्स डेवलप्ड। इसके अंदर पेशेंट को जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं दोज आर बेसिकली प्रॉब्लम विद बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होती है पेशेंट को या तो थ्रोट में या अपर चेस्ट में। कई बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में। कुछ केसेस में पेशेंट को स्वॉल्विंग की दिक्कत आने लग जाती है, पेशेंट अपना खाना प्रॉपर्ली स्वॉलो नहीं कर पाता, जिसको हम मेडिकल के टर्म में डिस्फेजिया कहते हैं। इसके साथ कुछ केसेस में, जैसे केस एडवांस केसेस में, देयर में बी परसिस्टेंट कफ, पेशेंट को बार बार खांसी होना, वॉइस का चेंज होना, दैट इज़ नोन एज लेरेंजाइटिस। पेशेंट में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है वोकल कॉर्ड्स की, क्योंकि जो आपका स्टमक का बाइल या एसिड है वो रिकर्जिटेट होके ईसोफेगस में आता है और उसको इरिटेट करता है। सो इसके कारण पेशेंट को ये कफ और एसिडिटी डेवलप हो जाती है। उसके इन्फ्लामेशन होने लग जाती है वोकल कॉर्ड्स में। कुछ केसेस में हार्ट की प्रॉब्लम या ईसोफिनियोजेनिक ईसोफेजाइटिस भी हो जाता है। इन केसेस के अंदर हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? मोस्टली जो पेशेंट्स है दे इग्नोर दिस कंडीशन थिंकिंग इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें पेशेंट को खट्टे डकार आना, प्रॉब्लम आना एसिडिटी की, बर्निंग सेंसेशन होना थ्रोट में, या कई और इश्यूज़ रहते हैं। ऑल्सो इसमें पेशेंट इमीडिएटली, स्पेशली रात के टाइम खाना खाने के बाद अगर इमीडिएटली लेट जाते हैं या स्पेशली आफ्टर डिनर दे हैव दिस प्रॉब्लम, देन दिस मे इंडिकेट GERD। इसकी डायग्नोसिस कैसे होता है? इसमें हम वेरियस टेस्ट कैन बी डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, जिसके अंदर की बेरियम मील एक्सरेज हो सकते हैं इसोफेगस के, then there is some CT scans that can be done, blood tests can be done for that, and also there are some other specific advanced tests that can be done to confirm the diagnosis, जिसके अंदर की esophagus manometry, the GI series of the upper gastrointestinal tract, those can be done to confirm that it is gastroesophageal reflux disease। अब इसके अंदर पेशेंट को होम्योपैथी में हाउ कैन दैट बी ट्रीटेड? In case of there is burning in the esophagus after eating the meal, उसके साथ पेशेंट को एक फैटी टेस्ट आने लगता है माउथ में, या कई बारी ज़्यादा रिगर्जिटेशन होने के कारण उनको इरेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली विथ फ्लैचुलेंस जो कि अपवर्ड मूव करती है। उन केसेस में एस्फिटिडा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। देन देयर आर केसेस जहाँ पे कि कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ईसोफेगस की, बिकॉज बार बार इरोजन या इरिटेशन होने के कारण ईसोफेजियल जो लाइनिंग है वो इरोड होने स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ईसोफेगस। That may be treated with phosphorus which is a very good medicine. Then कई बारी क्या होता है कि देयर इज़ अ obstructed feeling in the esophagus। पेशेंट जब खाना खाता है उसे लगता है कि खाना प्रॉपरली जा नहीं रहा स्टमक में, या उसको कंस्ट्रिक्शन फील होती है, स्पेशली लोअर एंड ऑफ दी और कार्डियक एंड ऑफ दी इसोफेगस में। तो इन केसेस के अंदर मेडिसिन सच एज फॉस्फोरस, ब्राइटाकाप और कल्केरिया कैन बी यूज़फुल। ऑल्सो देयर इज़ सम पेशेंट्स जहाँ पे पेशेंट को पेन हो जाता है विद बहुत ज़्यादा सीवियर थर्स्ट लगने के कारण, या उनको स्पाज़म हो जाता है इसोफेगस का, क्योंकि जब इरिटेशन होती है इसोफेगस की उनको बार बार इमीडिएटली स्पाज़म और पेन फील होती है इसोफेगस में। तो in such cases medicines such as Rustox, arsenic album, then there is Naja and other medicines like phosphorus, ammonium or thiocyanum, which can be useful, especially if there is stricture.
एंड देन देयर इज़ ऑल्सो अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ईजोफेगस की, इन दोज केसेस पैथोलॉजिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन सच एज phosphorus, vectrum, viridi, or there are some other medicines like naja or some other which can be helpful to treat this condition. Now, how do we manage in general this condition of GERD? But before we go into that, also let us discuss about four types of GERD or how they are classified into four major types. So, four major types say GERD grade 1 to grade 4. ग्रेड 1 में बेसिकली पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं इसके, दैट कैन अकर इन अबाउट वंस और ट्वाइस अ मंथ. ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. पेशेंट को कफिंग हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, स्टमक में रिफ्लक्स एसिड का बार बार बाइल का वापस आना इसोफेगस में, दैट कैन कॉज बर्निंग आफ्टर ईटिंग और आफ्टर लाइंग डाउन स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम. Then there can be other symptoms like laryngitis, voice का change हो जाना due to inflammation of your vocal cords, और कई बारी न्यू केसेस ऑफ अस्थमा में डेवलप, और पेशेंट जिनमें ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रॉब्लम वर्सन होनी शुरू हो जाती है. तो इन दोज केसेस के अंदर दिस मेडिसिन्स एंड दिस टाइप ऑफ केसेस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू ग्रेड 2 और ग्रेड 3. नेक्स्ट द सीवियर फॉर्म ग्रेड 4 जो GERD है, विच इज़ अ प्री कैंसरस और कैंसरस स्टेज दैट डेवलप्स इन वेरी एडवांस्ड केसेस. उन केसेस के अंदर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन, complete constriction of the esophagus, they are not able to digest or swallow anything, और कैंसरस डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि जो म्यूकस लाइनिंग है इसोफेगस से, दैट इज़ कम्प्लीटली डिग्रेडेड एंड इरोडेड एंड देयर इज़ नो चेंज इन देम. Now, these conditions can be treated with proper medicines and management. Now, what is the general management in GERD? General management में it is important that the patient avoid going or lying down at bed immediately after eating. कुछ भी खाने के बाद उन्हें लेटना बिल्कुल नहीं है. पेशेंट को 1-2 घंटे एटलीस्ट दे शुड सिट डाउन so the food gets enters into the stomach and does not regurgitate into the esophagus. Secondly, they should increase the intake of water during the day. This will not only help in digestion of the food that is in the stomach, but also help in soothing the irritation that occurs due to the regurgitation of the bile. Also, in some cases, the patient should try to have a very light dinner, or should include more fibrous and fruits in their diet, especially at the night time. They should have a very light meal, like broth or dalia or any such food that can be digested easily, since the metabolism is already slowed down at night. One important thing that would like to mention is that some people who are not able to recognize these symptoms start taking antacids for their problem, because they are having this acidity and they think that this is an acidic problem, and then they start taking antacids. What this causes actually worsens the condition. Why? Because the patient who is already have a slow digestion, the stomach is producing the acid to digest the food. If you are taking the antacids, those are actually going to decrease the acidic content of the stomach. Now, when that occurs, the acidic content further inhibits the digestion of the food, and your esophagus is already irritated. So once the bile gets regurgitated into the esophagus or it is in the stomach, the food doesn't get digested properly, and that results in further accumulation of waste toxins in your body, because the food is not getting absorbed, it is not getting digested. So this may result in further toxic production of bacteria in your stomach or in your intestine and lead to further complications and symptoms. These may vary from constipation, having a severe headache or heaviness in the chest, especially on lying down. Some patients may have worsening of this asthma symptoms. Some patients may develop persistent cough or frequent infections of the chest or the respiratory tract.
In some cases also there may be heaviness in the chest immediately after eating frequently. So these should be avoided, the antacids should be avoided, and a more alkaline based diet should be taken. This should be followed with also, like, you can take about warm water, lukewarm water with honey or lemon in the morning, empty stomach, to help with your digestive metabolic traits. Also, then there are some managements with would include would be like walking or doing regular exercises, so help to further increase the digestion of the food that you have eaten. So maintaining an active lifestyle is important in this condition, and only if the condition gets worsened, that where there is complete stricture or constriction of the esophagus and it is completely got blocked or something, that surgery may be averted to. So this was a short video on gastroesophageal reflux disease. In case you found it informative, please like and share, and have a great day.